Hello students, Assalamu alaikum. This is Aftab Mullah from Dr. Asadullah Khan English Medium School and Junior College, Solapur. We are going to start your computer subject lessons from today onwards. So this is the first lesson we are going to start from today, and that is history of computers. So let's begin this journey. As you know that computers are the integral part of our life. Computers are everywhere in our day-to-day life. We can see them in our home, in offices, in schools. Even right now, the smartphone you are holding is also a type of a computer. So let's see how this all begins. तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर्स की शुरुआत कैसे हुई और आज इस सिचुएशन तक, इस पोजीशन तक हमारे कंप्यूटर्स कैसे पहुँचे. First, the word computer means something, a machine which can compute or calculate numbers and gives answers as an output. कंप्यूटर्स मतलब एक ऐसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जिससे आप अपने कैलकुलेशंस कर सकते हैं, नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका आउटपुट जो है आपको मिलता है, उसके आंसर्स मिलते हैं. Ancient computers. In ancient times, people used stones and pebbles to compute and to calculate numbers. 5,000 years ago, Chinese invented abacus. Abacus is a system where you calculate the numbers by using beads. And today also we use abacus in mathematical operations. In the year 1640, John Napier invented Napier's bones. In the year 1622, William Oughtred built slide rule. With the help of this type of slide rules, they used to calculate numbers. In the year 1642, Pascal invented the rotating wheel. With the help of rotating wheel, he used to do addition and subtractions and other mathematical functions. It is one of the important invention and important step in the development of computers. A famous scientist, Charles Babbage, invented difference machine in 1822. चार्ल्स बैबेज नाम के एक बहुत फेमस साइंटिस्ट ने 1822 में डिफरेंस मशीन नाम से एक मैकेनिकल कंप्यूटर इन्वेंट किया, and it is considered as the first mechanical calculator. Now you have seen that we are talking about the computers from the year 1622 or even before that. So you know that there were no electricity at that time. अभी इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो सारी चीज़ें जो है वो मैकेनिकल हुआ करती थी और मैकेनिकली चलती थी. So Charles Babbage was the first scientist who invented a mechanical calculator named difference machines. In the year 1837, he developed analytical engine, the second mechanical computer. His fellow Ada Lovelace is considered as the first programmer of the world. प्रोग्रामर वो होता है जो आपके कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर के लिए कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस लिख के देता है और उस इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में कंप्यूटर में आपको इनपुट करना होता है ताकि आपको सही आउटपुट मिले. सो एडा लवलेस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड. So this is about the ancient computers. Now let's talk about the modern computers. Modern computers can be divided in generations. Generation is the state of improvement or change in a product or in human being throughout the time.
For example, when we say our grandfathers and great grandfathers are from old generation, so they belongs to the past and we belong to the present. So we are the present generation, young generation, and they are the old generations. So in the same way, the computer can be divided in different generations. So normally there are 5 generations of computers. So let's start with the first generation of computers. The first generation starts from 1946 to 1958, which is based on vacuum tubes. The computers in this generation based on primarily vacuum tubes. Two American scientists, Eckert and Mankley, developed ENIAC. ENIAC is used for artillery firing tables. Artillery firing tables means artillery फायर करते वक्त आपके बंदूक की नोक किस एंगल में रहनी चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन ENIAC कंप्यूटर्स आउटपुट के ज़रिए देता था. ENIAC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. It was the first programmable electronic and general purpose digital computer. In ENIAC, vacuum tube, decimal number system and stored programs were used. इस कंप्यूटर को मैन्युअली सेट करना पड़ता था, मैन्युअली प्रोग्राम करना पड़ता था अलग अलग स्विचेस का इस्तेमाल करके. इसके बाद एडवैक एंड उसके बाद यूनिवैक नाम से 2 कंप्यूटर्स डेवलप किए गए, जो कंपैरेटिवली यूनिवैक ENIAC से स्मॉलर थे साइज में and a little bit faster also. But the first generation computers were so large, so huge, it could consume the entire rooms and consumes lot of energy, lot of space, and they were slower, and also they are too costly. Not a common person can afford to buy a computer of first generation. In UNIVAC and EDVAC, magnetic tapes were used for input and output of the data. Magnetic tapes का यूज़ किया जाता था EDVAC और UNIVAC कंप्यूटर्स के अंदर इनपुट एंड आउटपुट डेटा निकाल कर देने के लिए. जैसे कि IBM 1401 ये मशीन इन्वेंट किया था IBM कंपनी ने, which was based on magnetic tape. Now, second generation computers between 1959 to 1964. These are called transistor years. In 1947, Bardeen, Shackley and Barton invented transistor at AT&T Bell Labs. इस तरीके के दिखने वाले ट्रांजिस्टर को बार्डिन, शैकले एंड बार्टन ने इन्वेंट किया था AT&T बेल लैब्स में. वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले ट्रांजिस्टर फास्टर थे, रिलायबल थे, साइज में भी स्मॉलर थे एंड ऑल्सो दे आर चीपर. द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड मैग्नेटिक कोर मेमोरी. जैसे एडवैक एंड यूनिवैक में मैग्नेटिक टेप्स यूज हुआ करते थे, उसी पे बेस्ड यहाँ पे मैग्नेटिक टेप यूज़ किए जाते थे डेटा को स्टोर करने के लिए. केवल चीज़ ये थी इस जनरेशन की कि यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेजेस, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस को इन्वेंट किया गया, जैसे कि कोबोल एंड फोर्ट्रॉन. नाउ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, ईयर बिटवीन 1964 to 1970. These computers are based on integrated circuits or ICs. सेकेंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर की जगह थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स ने ले ली, ICs ने. सो दे आर एक्चुअली स्मॉल चिप्स on which
the programs has been written. They were more smaller and speed of processing was also good. In these computers multi programming was possible. एक साथ आप एक से ज़्यादा काम कर सकते थे इन कंप्यूटर्स के ऊपर. आज जो आप मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस यूज़ कर रहे हैं, ये सारे थर्ड जनरेशन में इन्वेंट किए गए थे, बने थे. इससे पहले कीबोर्ड, माउस सेकंड और फर्स्ट जनरेशन में नहीं हुआ करते थे. वहाँ पे स्विचेस थे. नाउ इन द थर्ड जनरेशन you can directly input and you can see direct output on a computer screen. Give the input with the help of keyboard and mouse. For example, in IBM 360 or IBM 370 or Burroughs 5700, 6700 and 7000. These models are considered as integrated circuits. Now, the fourth generation computers, 65 to 1990. This age is called as microprocessors, the computers based on the microprocessors. This is the important stage in the development of today's computers. Microprocessors are monolithic ICs, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थर्ड जनरेशन में थे वही इंटीग्रेटेड सर्किट्स यहाँ पे यूज हुए, बट यहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल चिप में कन्वर्ट किया गया है. मतलब पहले जो में कंप्यूटर्स आते थे वो अभी एक सिंगल चिप के अंदर उतना डेटा, उतना स्टोरेज और उतनी पावर एक सिंगल छोटी चिप के अंदर आ गई. और ये माइक्रो प्रोसेसर जो है, इट कैन डू द एंटायर प्रोसेसिंग, ऑल प्रोसेसिंग ऑफ अ कंप्यूटर. दिस माइक्रो प्रोसेसर कैन डू all processing of the computer. Even today also we use this type of microprocessor in our computers and laptops. These microprocessors used LSI technology, large scale integrated circuits technology. माइक्रोप्रोसेसर से कंप्यूटर्स की साइज बहुत कम हो गई, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कॉस्ट भी जो है वो कॉमन लोगों के लिए एफोर्डेबल हो गए. द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर वाज बिल्ट बाय इंटेल कंपनी इन 1971. आज भी इंटेल के माइक्रोप्रोसेसर्स दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं और मैक्सिमम कंप्यूटर्स जो है आपके जो आज चलते हैं लैपटॉप से डेस्कटॉप है, दे यूज्ड इंटेल माइक्रोप्रोसेसर्स. सो नाउ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स starts from 1991 to present day. These computers used VVLSI technology, that is very large scale integrated technology. These computers are extremely high speed and can do parallel processing. एक साथ अनगिनत काम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर आप कर सकते हैं. And you can use it for internet and for other heavy and professional works. These computers are called as desktops, laptops, smartphones, robots and self-automated machines. इस कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हुआ, जैसे कि बायोमेट्रिक मशीन्स, रेटिना स्कैन्स, फिंगरप्रिंट, etc. And robots are also has been invented in this generation. So on the basis of generations, the computers has been divided in 5 generations. On the use of computer, there are 4 major types of computers, that is microcomputer, mini computer, mainframes and supercomputers. We will see these in details in the next video. I hope you understand the history of computers and how we came here from the abacus system
to today's laptops and smartphones. Thank you for watching this video. This is Aftab Mullah signing off. Assalamu alaikum.